started. Good morning. I'm sorry, due to some operational problems, we couldn't start in time. So we'll be continuing. Can you hear me? Yes, sir. So last time we were discussing this eigenvalues and eigenvectors. Basically, the topic that we have been discussing is the computation of or evaluation of state transition matrix. उसका हम तीसरा मेथड ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था. But then in that method we had actually assumed something that the eigenvectors of a matrix A, which has got distinct eigenvalues, they are linearly independent, and that theorem we had stated last time, and we are going to prove it today. So the statement of the theorem I had already given to you. I'll not write it once again. The theorem was that if V1, V2 up to so on up to Vn are the eigenvectors of a matrix A associated with distinct eigenvalues lambda 1, lambda 2, so on up to lambda n. And what we have to prove is that if V1, V2 to Vn are the eigenvectors of matrix A associated with distinct eigenvalues, then we have to prove that then V1, V2, so on up to Vn are linearly independent. मैंने फिर से स्टेटमेंट लिखी दी है, are linearly independent, and the matrix P is equal to V1, V2, so on up to Vn transforms matrix A into Jordan's canonical. सेकेंड वाला पार्ट जो सेकेंड वाला पोर्शन है इस थ्योरम का that we have already done. We have seen that if we assemble a matrix P which has got the eigenvectors of matrix A as its columns, then P inverse of AP is actually in Jordan's canonical form. वो हमने लास्ट टाइम प्रूव कर लिया था, लेकिन उसमें हमने एक assumption ली थी कि P actually invertible है. और P के invertible होने के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा जरूरी है कि इसके कॉलम्स जो हैं वो linearly independent हो. So this we are going to prove. So we are going to prove that V1, V2 up to Vn are linearly independent. तो इसके लिए मैंने आपको लास्ट टाइम कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दी थी. बैकग्राउंड बेस का है वो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि अगर आपको एक सेट ऑफ वेक्टर्स देखना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो आप उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन लो. सो वी विल कंसीडर द लीनियर combination of vectors V1, V2 up to Vn defined as alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus so on alpha n Vn equal to 0, where alpha 1, alpha 2, so on up to alpha n are real scalars. So if we consider this linear combination, and if we are able to prove that alpha 1 equal to alpha 2 equal to so on equal to alpha n are all zeros, then that will imply that V1, V2, so on up to Vn are linearly
independent. Is that clear? ये मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर आपको एक सेट ऑफ वेक्टर्स देखने हैं लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है तो आप उनकी एक लीनियर कॉम्बिनेशन डिफाइन करो and put it equal to 0, and if it can be proved that the only solution to this equation is all alphas equal to 0, then this set of vectors are linearly independent. If this is true for any other non-zero value of alpha, then the vectors are linearly dependent. ये मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल से भी दिखाया था. Is it clear or I need to explain it once again? Yes. मैंने एग्जांपल लेके समझाया था आपको लास्ट टाइम में. Yes, I want a response from you. I am waiting for the response. Yes, sir. वो समझ में आया था. ये समझ में आया. ठीक है. Now we move. So we define. Please follow the steps properly. We are defining an operator Pi is equal to lambda I minus a into Vi. Lambda I minus a. We are defining an operator Ti is equal to lambda I minus a. Then Ti Vi will be equal to, as per this definition, it will be lambda I minus a into Vi. It will be further equal to lambda I Vi minus a Vi. This is lambda I Vi. What is a Vi equal to by definition of eigenvalues and eigenvectors? A Vi is equal to lambda I Vi. So this is equal to 0. That is Ti Vi is equal to 0. Is that okay? Yes. Also, Pi Vj that will be equal to lambda I minus a into Vj. That is lambda I into Vj minus a Vj, which is equal to lambda I Vj minus, what is a Vj equal to? It is lambda j into Vj by definition of eigenvalues and eigenvectors, which is further equal to lambda I minus lambda j into Vj. Is it okay? Is that clear? Yes, sir. Okay. Now consider that expression linear combination of vectors alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus so on alpha n minus 1 vn minus 1 plus alpha n vn equal to 0. Now free multiply by t1. Ti, already I have given you how Ti is defined. So T1 will be lambda 1 I minus a. I am pre-multiplying this expression by T1. So what do I get? Alpha 1 is a scalar. It can be put anywhere. So this is alpha 1 T1 V1 plus alpha 2 T1 V2 plus so on alpha n minus 1 T1 Vn minus 1 plus alpha n T1 Vn equal to 0. Is that okay? Now alpha 1, what is T1 V1 equal to? What is Ti Vi equal to? We have just now written it. What is Ti Vi equal to? Ti Vi is equal to 0. That is T1 V1 is equal to 0. Isn't it? Yes, sir. And what is T1 V2 equal to? Ti Vj. That is lambda I minus lambda j into Vj. So what is T1 V2 equal to?
It is equal to lambda 1 minus lambda 2 into V2. Isn't it? Yes, sir. So first term will be 0. Second term will be alpha 2 into lambda 1 minus lambda 2 into V2. Is that clear? And third term जो इसके बाद होगी, that will be actually T1 V3. So that will be alpha 3 into lambda 1 minus lambda 3 into V3. तो ऐसे ही ये टर्म्स बढ़ती जाएंगी प्लस सो ऑन प्लस दिस टर्म विल बी दिस इज अल्फा n minus 1 t1 into vn minus 1. अल्फा n minus 1 तो वहीं पर आएगा, t1 into vn minus 1 it will be lambda 1 minus lambda n minus 1 into vn minus 1. Is that okay? Plus last term, this one. This will be alpha n into lambda 1 minus lambda n into Vn equal to 0. Are you following me? Yes, sir. मैं एक और टर्म भी लिख लेता हूँ यहाँ पे. इसके बाद वाली टर्म क्या होगी? अल्फा 3 into lambda 1 minus lambda 3 into V3. ठीक है ना? Line. Now after that what I do is, पहले मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? प्री मल्टीप्लाई किया T1 से. Now I will pre multiply both sides with T2. Pre multiply both sides with T2. So what do I get? C. This will be alpha 2 lambda 1 minus lambda 2 T2 V2. What is T2 V2 equal to? Zero. T2 V2 is 0. तो जब आप T2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी. Is that okay? और ये वाली टर्म में T2 V3 आ जाएगा. और T2 V3 किसके बराबर है? T2 V3 is lambda 2 minus lambda 3 into V3. Isn't it? Are you following me? And this moves on like this. Pocham यहाँ, this is alpha n minus 1, lambda 1 minus lambda n minus 1, and then it will be T2 Vn minus 1. So that is lambda 2 minus lambda n minus 1 into Vn minus 1. और ये last वाली term क्या आएगी? This will be alpha n, lambda 1 minus lambda n, then Tn. This T2 Vn. So T2 Vn will be lambda 2 minus lambda n into Vn is equal to 0. Is that clear? Are you following the steps? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे. We'll keep on multiplying. Keep on multiplying. By T3, T4, so on up to Tn. So keep on multiplying it. So जैसे जैसे आप T3 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले वाली टर्म गायब हो जाएगी. Isn't it? V3 वाली टर्म जाएगी क्योंकि उसमें T3 V3 आएगा. सही है? Yes, sir. जैसे जैसे आप मल्टीप्लाई करते जाओगे एक एक टर्म गायब होती जाएगी और फाइनली जब आप Tn पे पहुंच जाओगे, लेट मी राइट Tn minus 1 भी लिखूं मैं जस्ट टू मेक द थिंग्स क्लियर. इसके बाद Tn से भी मल्टीप्लाई करना है तो ये मल्टीप्लाई होता जाएगा. जब मैं Tn minus 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाली एक्सप्रेशन जो मेरी बचेगी इसमें खाली ये दो टर्म्स रहेंगी उस टाइम. Isn't it? Tn minus 1 से मल्टीप्लाई करके ये वाली टर्म भी खत्म हो जाएगी. Isn't it? Yes, sir. और फाइनली क्या बचेगा? When I multiply with this, what will remain is I'll get so alpha n lambda 1 minus lambda n. This I'll multiply up to Tn minus 1. So this will be lambda n minus lambda 1 minus lambda n
ये वाली टर्म तो जाएगी, then it is lambda 2 minus lambda n so on up to, फिर ये tn minus 1 into vn, what will that be equal to? lambda n minus 1 Lambda n minus 1 yes, minus lambda n this is actually yes, minus lambda n into bn vn, equal to 0. that's equal to 0, isn't it? अब ये वाली एक्सप्रेशन देखो आप, आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं, आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं, तो ये वाली टर्म्स नॉन जीरो होंगी सभी. lambda 1 minus lambda n is going to be non-zero, lambda 2 minus lambda n is going to be non-zero, and all these eigenvalues are going to be non-zero. These terms are going to be non-zero, isn't it? Yes, sir. Are you getting it? These terms are going to be non-zero. Vn cannot be zero. So if the product of terms is equal to zero, any one of them has to be at least zero. जैसे ये Yes, sir. product of terms है ना यहाँ पे. Yes, sir. इसमें Yes, ये sir. वाली terms तो non-zero होंगी. Vn eigen vector है, ये zero हो ही नहीं सकता. So only possibility is that alpha n has to be zero, isn't it? Since the eigenvalues are distinct, since the eigenvalues are distinct and Vn cannot be equal to zero, this implies alpha n is equal to, isn't it? Is that okay? Yes, sir. अब बैक सब्स्टिट्यूशन करके, जैसे इससे पहले मैंने किससे मल्टीप्लाई किया होगा इस एक्सप्रेशन को, बिफोर दिस tn minus 1 से पहले मैंने किससे प्रोडक्ट किया होगा? T n minus 2. यस, tn minus 2 से, isn't it? Yes, sir. tn minus 1 से पहले मैंने tn minus 2 से प्रोडक्ट किया होगा. tn minus 2 से प्रोडक्ट करते टाइम vn minus 2 वाली टर्म जीरो हो गई होगी और उससे पिछले वाली टर्म्स भी जीरो होंगी. तो उसमें फिर क्या बचेगा? मूविंग बैकवर्ड, कैन यू टेल मी कि इससे पहले वाली एक्सप्रेशन क्या होगी? So Yes. lambda n to the power minus 1, lambda n minus 1 and minus alpha 1 n minus 1, yes, into lambda 1 lambda 1, minus yes, lambda n minus 1, ठीक है. yes lambda 2 minus lambda n minus 1 Okay. So And on. lambda n minus 2 minus lambda n minus 1, and minus 1 into है ना? yes sir Into v Yeah. n minus 1. minus 1 और ये वाली टर्म क्या होगी उस टाइम? This one, this will be same. Alpha n into lambda 1 minus lambda n, lambda 2 minus lambda n, so on up to lambda. Yes. Yes, help me in lambda this. n minus 2 minus lambda n Lambda n minus 2 minus lambda n into vn mbn equal to 0, है ना? yes sir अब यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया कि अल्फा एन जीरो है, तो ये वाली टर्म सारी जीरो हो गई. yes sir नाउ बचा खाली ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला टर्म, ये वाला जो टर्म है, इसमें बाय द सेम लॉजिक, सिंस द आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, so these cannot be, this product terms cannot be zero, and vn minus 1, since it's an eigenvector, it also cannot be equal to 0, so this implies alpha n minus 1 equal to 0. yes sir Are you following me? yes sir yes sir So using the fact that alpha n is equal to 0 and eigenvalues are, मैंने बहुत सारे फैक्ट्स इसमें यूज कर रहा हूँ. एक तो alpha n 0 है, eigenvalues distinct हैं, and vn minus 1 cannot be equal to 0.
That implies then alpha n minus 1 equal to 0. Isn't it? And if you keep on moving backward, keeping on moving backward, we can prove that all alphas alpha n equal to 1. Is that clear? बैकवर्ड जाने का मतलब मैं इससे पिछली वाली एक्सप्रेशन पे जाऊंगा जिसमें 3 टर्म्स होंगी, अल्फा n माइनस 2 वाली टर्म, isn't it? और उसमें मैं ये वाला फैक्ट यूज करूंगा कि अल्फा n भी 0 है, अल्फा n माइनस 1 भी 0 है, and the eigenvalues are distinct, and vn minus 2 cannot be equal to 0. That will go on to prove that alpha n minus 2 is 0. And I will move backward up to the first equation, and in that we can prove that all alphas are equal to 0. Are you okay with this proof? Yes, sir. So this is what we had to prove actually. So this actually implies that v1, v2, so on up to vn are linearly independent. Is that clear? So remember that eigenvectors of a matrix A associated with distinct eigenvalues are linearly independent. क्योंकि वो कंडीशन हमने पहले ही बोला था कि eigenvalues distinct हैं, और उसी वजह से हम ये प्रूव भी कर पाए. Because when we use this expression, this is equal to 0, we use this fact that eigenvalues are distinct and this difference cannot be 0, isn't it? Had the eigenvalues been non-distinct, that means अगर repeated होते तो उस केस में कोई टर्म इसमें 0 भी आ सकती थी, isn't it? So you have to remember that when a matrix A has distinct eigenvalues, then the eigenvectors associated with that matrix A are linearly independent. और जो इसका दूसरा पार्ट है इस थ्योरम का कि P is equal to this that transforms A into Jordan's canonical form, that has been already proved last time. हमने जो मैट्रिक्स P जो है जिसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, तो हमने देखा कि ये मैट्रिक्स जो है ये एक्चुअली P को ट्रांसफॉर्म करता है, A को ट्रांसफॉर्म करता है into Jordan's canonical form. Do I need to reprove that? We have already proved that last time. जब हमने डेफिनेशन ली थी ना आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की, तो हमने कुछ ऐसा लिया था AV1 equal to lambda 1 V1, AV2 equal to lambda 2 V2, so on. AVn minus 1 equal to lambda n minus 1 Vn minus 1. This is by definition of eigenvalues and eigenvectors. AVn equal to lambda n Vn. इसको फिर हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ ऐसे लिखा था. This is A, then V1, V2, so on up to Vn is equal to, this we had written like this. This is V1, V2, so on up to Vn, and this is further equal to, और इसमें साथ में यहाँ पे ये मैट्रिक्स है lambda 1, 0, 0, so on up to 0, 0, lambda 2, so on up to 0. कुछ ऐसे ये जो n इक्वेशंस है इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखा था. यही वाला मैट्रिक्स आपका P है एंड दिस इज आल्सो P, और इस वाले मैट्रिक्स को हमने नाम दिया था कैपिटल लैम्डा. रिमेंबर, so we had written it as AP is equal to P into lambda, और उसमें हमने फिर वहां पे assumption, yes, उसमें फिर हमने assumption ली थी कि P is invertible, जो हमने आज प्रूव कर दिया कि P is actually invertible. तो since P is invertible, वहां पे मैंने लिखा था assuming P is invertible. अब हमें पता है कि P invertible है, 3 multiply by P inverse. 3 multiply by P inverse. So what do I get? P inverse of AP is equal to lambda. That means if you perform this operation, which actually is a similarity transformation performed on A,
you will end up with a diagonal matrix, because this is a diagonal matrix having eigenvalues along the diagonal. The only condition is that the eigenvalues must be distinct, because in that case only we have proved so far that this matrix P is going to be an invertible matrix. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Sir, yes. तो ये प्रूफ है इसका, ये थ्योरम है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि कंट्रोल सिस्टम्स में बहुत ज्यादा प्रेडोमिनेंटली यूज होती है, पर्टिकुलरली ये स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन में जहां पर कि आपको डायगोनालाइज करना होता है. So now once we are done with this, now one thing remains is how do we compute eigenvectors? क्योंकि अगर आपको मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A दिया हुआ है जिसको आपने देखा कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं और आपको उसको डायगोनलाइज करना है, तो डायगोनलाइजेशन के लिए हमने देखा कि आपको ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, P इनवर्स AP. और P है क्या? ये जो P वाला मैट्रिक्स है, इट इज एक्चुअली द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग द eigenvectors of matrix A as its columns. Now the point is, how do we compute eigenvectors? Numerically, how do we compute them? Computation of eigenvectors. Have you learned how to compute eigenvectors in your matrix course? Matrices course? Do you know how to compute eigenvectors? So your silence means no. Eigenvectors obtain कैसे किए जाते हैं? Use the basic definition of eigenvalues and eigenvectors. I'll show you at least two ways of computing eigenvectors, and उसमें से एक तरीका जो है वो hand calculations के लिए easy है, वो भी मैं आपको बताऊंगा. Now by definition of eigenvalues, you know that this is the definition of eigenvalues. Lambda I, I'll write like this. ABI is equal to lambda I BI. Isn't it? Which I can write as lambda I minus A into VI is equal to 0. So you substitute the value of lambda. Eigenvalue जो भी आपको दिए हुए हैं वो आप इसमें substitute करो. मान लो lambda, we'll take lambda I equal to, for I equal to 1, that means the first eigenvalue. I'll have the expression like this: lambda 1 I minus A into V1 equal to 0. V1 is a vector, mind it. So you compute this matrix first, lambda I minus A. Let me assume that A is a 3 cross 3 matrix. So you will have something like this. Let's assume A is something like this: 0, 1, 0, 0, 0, 1, minus 6, minus 7, minus 6. Assume that A is something like this. So you will have some. इसका जरा eigenvalue obtain करो. इसका क्या आएगा? ये जो मैट्रिक्स है ये किस फॉर्म में है? Do you recognize the form of this matrix? ये किस canonical form में है ये वाला matrix? First canonical. First companion form, isn't it? First companion form में पता है आपको कि जो characteristic equation होती है इसकी, वो आप just last row को देख के लिख सकते हो. इसका characteristic equation क्या होगा इस matrix A का? Yes, anybody? The characteristic equation of this matrix will be S cube or lambda cube, you may write, plus 6 lambda square plus 11 lambda plus 6 equal to 0. Just try to confirm it. Just obtain lambda I minus A equal to 0. यही होता है ना characteristic equation matrix का. फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म में अगर मैट्रिक्स को तो मैं देख के ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकता हूं. जस्ट ट्राई टू कंफर्म इट, परफॉर्म दिस. राइट डिटरमिनेंट ऑब्टेन करो सभी.
determinant of lambda I minus a. I'm waiting for you to do it. मैं just wait ही कर रहा हूँ या आप कुछ कर भी रहे हो? सर कर रहे हैं. Do it and just tell me. जैसे ही आपको लगे कि फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म में आपको इमीडिएटली क्लिक हो जाना चाहिए था कि इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है. That's why this is canonical. That's why this is special. मतलब है ये सर यही आ रहा है. यही आ रहा है. यस सर. तो आपको एक क्लिक क्यों नहीं हुआ कि ऐसे लिखना है डायरेक्टली? हमने जब फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म लिखा था तो हमने आपको उस टाइम कहा था कि जो ट्रांसफर फंक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होता है उसके कोएफिशिएंट्स इसमें रिवर्स ऑर्डर में होते हैं और विद नेगेटिव साइन. So this is the characteristic equation. So what will be the correct solution of this equation? What will be the eigenvalues? Is getting the eigenvalues of this? -1 minus 3 Minus 1, -2 -3 minus 1, minus 2 and -3. minus 3. eigenvalues से मिलके मुझे eigenvectors चाहिए. eigenvectors मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करके मिलेंगे क्योंकि इसी में v1 है. Isn't it? तो इसमें for lambda 1 for put this lambda equal to -1 इस इक्वेशन में. तो इसमें अगर हम lambda 1 का वैल्यू डालेंगे इस इक्वेशन में it will become like this. So I'll first of all write it in terms of lambda only. So this is lambda 0 0 0 lambda and 0 0 0 and lambda minus a क्या है? A is 0 1 0 0 0 1 minus 6 minus 11 and minus 6. ये मैंने इवैल्यूएट किया है यहाँ पे lambda I minus a. So this is equal to, or I may even write lambda I minus a like this. So when I do this subtraction, I get lambda I minus 1 and 0, then 0, lambda I and 0, no, and minus 1. And 6, 11, and lambda I plus 6. ठीक है? Lambda I, Yes. I minus a, then multiplied by vi. That's equal to 0, isn't it? So I have lambda I minus a into vi equal to 0. ये मेरा definition है eigenvalues और eigenvectors. Lambda I minus a ये आ रहा है. अगर मैं इसका lambda I की जगह 1 रखूं, that I is equal to 1. So lambda I equal to lambda 1, and lambda 1 is equal to minus 1. What will this become? This is going to become lambda 1 is minus 1, minus 1 and 0, 0, minus 1 and minus 1, 6, 11 and 5.
and then there is vi here. Vi has three components. ये v1 है यहाँ पे, वेक्टर है, तो इसके तीन components होंगे, v11, v21 and v31. ये एक वेक्टर है, that's equal to 0. This is actually a zero vector. It's like this, 0, 0 and 0. Is that okay? Is that clear? Are you following me? Yes, sir. इससे मुझे क्या इक्वेशंस मिलेंगी फिर? तीन इक्वेशंस मिलेंगी ना? I'll get minus v11 minus v21 equal to 0. ठीक है? Then minus v21 minus v31 equal to 0. And I'll get 6 v11 plus 11 v21 plus 5 v31 equal to 0. यही मिलेगा ना? तीन इक्वेशंस, तीन वेरिएबल्स, लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि ये लैम्डा आई माइनस ए मैट्रिक्स है, इसमें कि लैम्डा की जगह मैं आइगन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो यू नो दैट लैम्डा आई माइनस ए इज एक्चुअली इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट इसका, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा, मींस इसकी रैंक, ये फुल रैंक मैट्रिक्स नहीं होगा, तो जब ये फुल रैंक मैट्रिक्स होगा ही नहीं, तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा. Do you know this from your mathematics background? For a set of equations of this type, in order to have a unique solution, this matrix must be a full rank matrix. That means it should be invertible. जबकि मुझे पता है कि lambda, determinant of lambda I minus a evaluated for the eigenvalue that's equal to 0. You note this. Isn't it? Are you following me? Are you following me? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ax equal to b, where a is a matrix, x is a vector and b is some other vector, and you want to solve it. इसके यूनिक सॉल्यूशन के लिए जरूरी है कि a इन्वर्टिबल हो. अगर a इन्वर्टिबल नहीं है तो उस केस में ये सेट ऑफ इक्वेशन, अगर इसकी रैंक कम है, इसकी कॉलम रैंक अगर कम है, तो उस केस में आप इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का मतलब कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल इसमें फ्री वेरिएबल होगा जो आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ऑब्टेन कर सकते हो. So this method, if you use for solving the eigenvectors, although this is a standard method for solving the eigenvectors, that means you need to solve this set of equations, but it will usually give you infinite solutions, and it is slightly confusing to select. Although infinite solutions में एक common feature ये होगा कि उन सभी solutions का direction same होगा, only उनमें एक scalar multiple आएगा बीच में. Can you solve this set of equations for me? जैसे पहली वाली इक्वेशन क्या है इसमें, माइनस v11 इज इक्वल टू v21, isn't it? और दूसरी वाली इक्वेशन क्या आएगी, माइनस v21 इज इक्वल टू v31. तो तीसरी वाली इक्वेशन का क्या पर्पस ही रहा फिर? What will be third equation? This is 6 v11 plus 11. What is v21 equal to? Minus v11, isn't it? Plus 5 times v31, that is minus 5 times v31. That is equal to what? That is equal to minus 5 v21, which is further equal to minus v11, which is plus 5 v11 equal to 0. So the equation is my trivial equation. This gives me 11 v11 minus 11 v11 equal to 0. That is 0 equal to 0. Are you getting me? Yes, sir.
तो ये वाला सेट ऑफ इक्वेशंस के लिए एक इक्वेशन रिडंडेंट है, मींस दो इक्वेशंस इसमें लीनियरली डिपेंडेंट होंगी। तो इसमें अगर मैं एक पर्टिकुलर वेरिएबल जो है जैसे v31 फिक्स कर दूं, लेट मी फिक्स v31 इक्वल टू 1। if I put v31 equal to 1, what will I get? v21 is -1 and v11 is 1. Is that clear? Yes, sir. What will be the eigenvector v1 then? It will be 1, -1 and 1. Is that okay? तो v31 को मैंने फिक्स कर दिया, तो v1 और v1 के वैल्यू उसके हिसाब से फिक्स हो गए। But what made me choose it equal to 1? I could have chosen it anything. I could have chosen it equal to 2, v31, isn't it? In that case, v21 would have become -2 and v11 would have become 2. So that would have become 2, -2 and 2, which actually has the same direction as this, because you could have taken 2 common and this would have still become 1, -1 and 1. Is that okay? Is that clear? Yes, sir. तो ऐसी सिचुएशन आपको हमेशा आएगी जब आपके पास ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होंगे और ये वाला मेथड आप यूज करोगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो आप देखोगे कि ये जो सेट ऑफ इक्वेशंस यहाँ पे है, ये जो मैट्रिक्स है ये फुल रैंक मैट्रिक्स नहीं होगा बाय डेफिनेशन ओनली। तो यू विल हैव मोर इक्वेशंस एंड लेस वेरिएबल्स, सॉरी लेस इक्वेशंस एंड मोर वेरिएबल्स। जैसे इसमें दो इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स, तो दो इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स के केस में एक वेरिएबल आपको फिक्स करना है और बाकी वेरिएबल्स आप ऑब्टेन कर सकते हो। तो उसके हिसाब से इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, एंड दो बिकॉज़ आइगन वेक्टर्स आर बेसिकली एसोसिएटेड विद द डायरेक्शन, so any vector can be chosen as the eigenvector. Is that clear? Is that clear to all? Yes. अच्छा, सेकंड आइगनवेक्टर मैंने बनाना है। सेकंड आइगनवेक्टर के लिए i का वैल्यू मैं 2 पुट करूंगा, isn't it? Yes, sir. यहाँ पे सेकंड आइगनवेक्टर 2 आइगन वैल्यू 2 पुट करेंगे, so this will become 2 - 1 0 0 2 - 1 6 11 and 6 11 and 4, isn't it? And second eigenvector, that is v1 2 v2 2 v3 2 equal to 0 0 and 0, and then you have to again solve this set of equations. And similarly you have to do for the third eigenvalue also. So when you have solved these simultaneous equations for 3 eigenvalues, you will end up with that v1 v2 and v3. Is that clear? Yes, sir. Is the procedure clear? Yes, sir. तो ये Yes, आप ये जो ये न्यूमेरिकल है इसको आप सॉल्व करोगे एक्चुअली यूजिंग दिस मेथड फॉर ऑल द 3 eigenvectors. I'll check it in the next class, and if you feel there is some problem somewhere, I will just discuss that with you. इसमें एक और मेथड भी मैं आपको दिखाऊंगा जो यूजुअली हैंड कैलकुलेशंस के लिए ज्यादा इजी रहेगा, that I will show in the next class because already it's 10. So we'll wind it up this time, and in the next class we'll be briefly discussing this in the beginning, and we'll wind it up that day, and we'll take up some numericals, and जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि स्टेट इक्वेशंस के सॉल्व करने के, पूरा नॉन होमोजेनियस स्टेट इक्वेशंस को सॉल्व करने के न्यूमेरिकल्स देंगे कुछ, और ये भी देखेंगे कि ये वाला मेथड यूज करके स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है न्यूमेरिकली। इज दैट क्लियर? ये वाला न्यूमेरिकल आप कंटिन्यू करोगे, इसके आइगन वेक्टर्स मुझे नेक्स्ट टाइम बताओगे आप कि वो आइगन वेक्टर्स इसकी क्या हैं, और ये भी क्योंकि इसके आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं, आप ये भी न्यूमेरिकली देखोगे कि वो जो मैट्रिक्स P है वो इनवर्टिबल होगा, v1 v2 v3 जिसमें 3 eigenvectors हैं. That means you will prove that those 3 eigenvectors are linearly independent. Is that clear? Yes, sir. So I'll wind it up this time. We'll meet in the next class. Thank you.